drilled to learn stigma. This victimization is a learned behavior. बहुत पावरफुल बात मैंने आपसे बोल दी है, ये पता नहीं मेरे माइंड में. Victimization is tutored. Some degree of victimization is actual, but a lot is that of tutoring nature. आपको बता दिया जाता है कि if rape happens, what are the kinds of reaction you are supposed to do. Even reactions are also drilled in your mind. You are so programmed. You are programmed victims. Victims are programmed. Even reaction patterns we have taught them. If your reaction falls away from the defined code, then you are a rebellious victim. You are not a general, you are a deviant victim. मैंने एक आर्टिकल लिखा था 20 साल पहले, मतलब 20 साल, मैंने अभी हम लोग बात कह रहे थे, थोड़ी मैंने बात कम कर दी. देखो एक बार हम लोग दोपहर में बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध जिंदगी भर बोलते थे, बहुत बोला उन्होंने, आखिर में आके वो चुप हो गए. ऐसे बुद्ध बन जाइएगा. नहीं, मैं स्पीकिंग बुद्ध. अभी गोस्वामी जी से हम लोग बात कर रहे थे कि बुद्ध ने बात करनी बंद कर दी कि भाई जो कुछ कहना था वो सब बात कही जा चुकी है, अब तो लोगों को उस पर अमल करना है. तो वो ये है, कुछ लोगों ने कहा सब काम बंद कर दो, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल ही करते हैं भाई. ठीक है. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो स्टिग्मा की बात थी एंड समवेयर इस रिवेलियनशिप की बात थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. Victim has to reject this sense of stigma, sense of vulnerability and sense of labeling. वो मथुरा, अभी आप पूछ रहे थे ना, वो मैडम मथुरा केस की बात जो मैडम पूछ रहे थे ना, अभी बात हो रही थी कि whether sex worker can be raped, बात आ रही. मथुरा केस में तो कोर्ट ने यही कहा था कि it is the agency of the woman. It's not, it has nothing to do with the background of the victim. This question was rejected, but we are somehow still trying to perpetuate those stereotypes, क्योंकि उसमें बड़ा फायदा है. देखिए हर आदमी, देखिए एक बड़ा अजीब सी कहानी है, ह्यूमन रेस जो सेपियंस में लिखा है ना हरारी ने, उसने बड़ी अच्छी बात कही. दिक्कत ये है कि हर आदमी चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सब लोग वैसे ही सोचने लगे. ये बड़ी कमाल की बात. और अगर वैसा नहीं सोच रहे तो वो लगातार कोशिश करेगा, और वो कोशिश और ज्यादा होगी अगर वो आदमी पावरफुल होगा. हर आदमी को आप इंटेलेक्चुअली भी टेम करना चाहते हैं. दैट इज द होल प्रॉब्लम. सो हियर रिजेक्शन ऑफ स्टिग्मा, रिजेक्शन ऑफ लेबलिंग. लेबलिंग मीन्स सोसाइटी एंड पीपल टेंड टू लेबल द विक्टिम. तो वो अभी उसमें बात आई, वो जो उसका केस था ना, वो बड़ा फेमस मैगजीन का, जो तहलका मैगजीन, तहलका या तेज, तो उन्होंने कहा था दिस विक्टिम doesn't seem to be a very convincing person, because she was physically capable of resisting the rape, therefore she can't be raped. Now this kind of and people, and you will find in it, there's a lot of people endorsing these things. तो यहीं के मंजर भोपाली साहब हैं, उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, बड़ा जुर्म है हुजूर ये बेखबरी. बेखबरी में लोग जी रहे हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे वैसे कहानियां भी बनाई गई हैं. Then next if you come कि what exactly happened, इसके बाद वाला एक, I always feel that we have always problematized the presence of victim in terms of the fact that there are agencies who are there out to the help of the victim. Fine, those are doing the thing, but there is a larger contribution of this victimization or victimhood appears, that you would see in terms of, अभी मैंने आपसे कहा कि lot of violence is structural law. So law has been created
because of the victim's experiences, and you will see social reform, family law reform, these things have happened because of the experiences of the victim. So victims' experiences have led to reform in society and in the law. 4 बार रेप लॉ रिफॉर्म हुआ है बहुत मेजरली, एंड यू कैन रिलेट विद वन हिस्ट्री. आपने बहुत पहले भौरी देवी केस सुना होगा, फिर आपने मथुरा सुना होगा, फिर आपने निर्भया सुना होगा. Three cases you have heard. These are the watershed moments in the criminal law reform history in the country. As if we need one incident to learn lesson. वो कहते हैं ना साहब, शेर है कि बातों से कौन कभी समझा है, सबको एक हादसा जरूरी है. तो हादसे बहुत जरूरी है. इन हादसों ने the criminal law reform was set up. So I am saying, if you see role of victims' experiences in reforming the society and reforming the criminal law has been very, very important, and therefore the survivorship question. I think I'll finish in 5 minutes. ठीक रहेगा? पेपर बड़ा है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको कोई पढ़ के सुना देगा. बहुत सी कथाएं प्रचलित है. एक और ये तो सुनने ही है आप. देखिए इस जमाने में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप इतने लोग बैठे हम लोगों को सुन रहे हैं. यार ये बहुत बड़ी बात. मैं तो आई एम ग्रेटफुल. ऑडियंस कहाँ मिलती है? ऑनलाइन का युग है. इसमें तो कैमरा ऑन हो जाते हैं, हम लोग कई बार बोल के आ जाते हैं 1-2 घंटे, वो पता नहीं चलता. ये सुना गया, रात भर इसमें रहते कि वेदर इट हैज गॉन. यहाँ तो आप कैप्टिव हो, मतलब कैप्टिव नहीं उस सेंस में, बट यू आर हियर. तो मोडेस्टी आपके साथ. हाँ है तो वैसे मोडेस्टी. थियरी ऑफ प्रोग्राम विक्टिम. मैं यहाँ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये बता दूं कि आफ्टर ऑल व्हाट आर द स्टेप्स which a victim can take in order to assert this survivorship. विनीत जी ये ठीक रहेगा? कभी कभी ठीक बोल देता हूँ बीच बीच में. आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं कब काम की बात मैं बोल दूँ. तो what can be done is, first step in the direction of survivorship would begin with where we advise the victim to acknowledge your current situation, accept that you feel victimized. जरा इसको चला दिया जाए, लिखा हुआ संभवतः ज्यादा याद रहेगा. And recognize what caused you to feel the way. Who can provide understanding, encouragement and guidance. Find meaning and purpose. Meaning and purpose. Look a win-win solution for all. Because as I have said, a lot of victimology is focusing on the secondary victimization experiences of the victim. But here I am saying something else. Then develop those boundaries. Next please. Create strategies for staying on your aim and keeping focused. Incidentally, अभी आपसे मैंने कहा था victim is a negotiator. You will find at least couple of provisions now is very important, where the victim emerges as someone powerful. So in plea bargaining, the victim is a negotiator. In bail now, the victim has to be considered. In charge sheet stage, nobody has actually looked at. When charge sheet is being prepared, a discharge can take place. But if victim insists, he or she can be present at the time of charge sheet. Ramesh Mishra judgment है, बहुत famous judgment है. And then at the time of sentencing, how much punishment should be given? Victim can insist the presence. And I am telling you it is then 372 earlier CRPC. अब तो section मुझे ज़्यादा याद नहीं है, हालांकि मैंने इसमें काम किया है, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे. But 372 proviso of CRPC provides, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, victim advocate. बहुत से लोग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, they ought to think of victim advocacy. Because if you are moving to survivorship,
you have to essentially look for victim advocacy. I have set up a clinic, victim advocacy clinic at National Law University, Delhi. And this advocacy is not like advocacy in ordinary sense. Here advocacy is not simply happening in the court or in the police station. It is the advocacy at the level of community. अभी मॉर्निंग में जो एग्जाम्पल है, विनीत साहब, ये इनको आप शब्द दें हम इसको, ये विक्टिम एडवोकेसी प्रोग्राम है. Victim advocacy, this term we have to popularize because it gives a sense of empowerment to the victim. ये बहुत जरूरी है. And then build a support system, include family, friends. अब उसमें आप देखें restorative justice is very prominent now, where communication circle or restorative justice circles have been created. So simply that exercise is possible in our case also. And then get outside of your comfort zone, learn about the trauma and effects, and a lot of other things are there. Now I'm closing with, there are a lot of slides, so I'm just moving from here. There are three verticals of this discussion. In victim-centric approach, the focus is on immediate aftermath of trauma, and in survivor-centric, it's not simply limited to that. Rather, individuals are conceived as active agents in their healing journey rather than passive recipients. But in terms of response, if you see, it involves immediate crisis intervention for victim. But for survivors, it is more on empowering the individual, enhancing their self-efficacy. And similarly, if you see the outcomes which will emerge from these three responses are going to be very, very different. I am not coming to all these things. There are a lot of things. There are legal measures which we are aware. And I believe that some of this discussion, go a very long way. Because I always say last words I am speaking. देखो क्या होता है, we are a very diversified country. And गोस्वामी जी यहाँ बैठे हैं, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं. Law enforcement in a heterogeneous society is very, very difficult. Law enforcement in homogeneous society is simple. We could not progress much on some of these things because India is a very, very heterogeneous society. कुछ लोगों को access to justice, अभी अरविंद तिवारी जी बता रहे थे कि there are people who are able to not only access, rather they are bulldozing the entire justice system and acquiring more access than what is required. But there are certain people, उनको कुछ नहीं मिल पाता. वो कहते ना कि कुछ की रात कटी मकानों में, कुछ का आसमां छत हो गया. So access to justice is highly diversified, and therefore even there are differentials in access. It's relative. Access to justice is directly dependent on your capacity to mobilize the institution. अभी इतना महंगा लीगल एडवाइस है, आपको लीगल एड की बात होती है. क्वालिटी लीगल एड बहुत महंगी है. क्रिमिनल लॉ हाई कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में. यू नो व्हाट इज द फी ऑफ ए लॉयर? बहुत ज्यादा. एंड देयरफॉर आई सेड दिस एंटायर डिबेट is very, very important. And while I close, I have two very important acknowledgements to make. First of all, I am thankful to Dr. Vineet. He is the hope of something good in police training field in the country. I am not saying this simply because he is my old friend. He is such a passionate person. हमें लोगों की बड़ी हिफाजत करके रखना है. हमारे पास बहुत कम लोग हैं, इनको हमें बचा के रखना है, इनको जल्दी जल्दी खर्च नहीं करना. They are very precious people. And ऐसे कुछ लोगों की वजह से ये सब बातें चल रही हैं, ये सब कारवां चल रहा है आपके सामने. और दूसरी बात, the entire Madhya Pradesh police, whose leadership is so
sensitive. And अभी मैं देख रहा हूँ lot of police officers who are asking question में, I go to other states also. I haven't seen such kind of atmosphere or ecosystem which is so enabling, so facilitating. And secondly, I am thankful to you also. Again, वही जो आप मुझे सुन रहे हैं उसके लिए, मैं जो श्रोताओं का मैं बहुत हमेशा बहुत ग्रेट, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से, ये आवाज़ जब तक चल रही है तब तक कारवां चलता रहेगा. Thank you so much. Thank you. A big round of applause for Sal again. तो बहुत ही अच्छा आपने ये जो